Now today we will do analysis of two algorithm. First one is the linear search algorithm and other one is the binary search algorithm. So linear search algorithm, it is a brute force method to find out number in a list of numbers. So the problem is search an array A of size n to determine whether the array contains the value key. So this is the key that we need to search in the particular array. And it return index if found, otherwise -1 if not found. So number is present, then it will return the index value of that array, otherwise it will return -1. So we are just initializing here set k equals 0. We are just doing comparison operation while k less than n. We have made two conditions here, and a of k is not key. So till then this loop will execute, and this is in the body of the loop. Add 1 to k. Okay, we will just increase the k up to n, and at the end of this we simply check if k equal n, then we simply return -1, otherwise return k. So now if we are talking about the complexity of this code, then we simply find out the total amount of work done. So before the loop, a constant amount a here, before the loop, it is a constant amount. Now each time through the loop, two comparisons and one operation, and an addition, a constant amount of work b. So each time through a loop, there will be two comparisons and an operation and an addition. So, and after the loop, a constant amount c of work. So basically, we are just denoting them in terms of the constant, means those are not dependent on the input. And if it is dependent on the input, then we simply just mention that in terms of the n. So if we are talking about the worst case of such algorithm, then we simply examine all an array location. So in the worst case, the number will be at the last position of the array, or it will not be in the array at all. So that will be the worst case. So why we are calling it worst case? Because worst case will be that when we need to compare our number or the key to be searched with all the elements at all the locations of the array. So like we are having this list, एंड वर्स्ट केस कब, बेस्ट केस कब होगा जब हमको यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे नंबर मिल जाएगा, मीन देयर विल बी ओनली सिंगल कंपैरिजन. वर्स्ट केस कब होगा, या जिसमें हमको मैक्सिमम कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, मीन वी नीड टू कंपेयर हियर 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 हियर. तो इसमें मैक्सिमम कंपैरिजन हो रहे हैं. जब सपोज नंबर यहाँ मिलता है तो भी इसमें हमारे इसमें 5 कंपैरिजन होंगे, और नंबर अगर इस लिस्ट में होता ही नहीं है तो भी हमारे यहाँ पे 5 कंपैरिजन होंगे. तो दैट विल बी द वर्स्ट केस. और इन दोनों के बीच का जो केस होगा, मीन्स नंबर कैन बी प्रेजेंट either at one of these locations, then that will be the average case. So in the worst case, we examine all n array locations. So T of n will be, this is the constant time before the loop, this is the constant time after the loop, sorry, this one. And this is the work done in the loop, b into n. So basically what we are doing here, let's suppose the first comparison operation is executing c1 n time, second one is executing c2 n time. So we are combining this, like c1 plus c2 is simply converting into another constant, that is b. So it is bn. तो t of n इक्वल, ये बिफोर लूप हो गया, ये विद इन द लूप हो गया, ये आफ्टर द लूप हो गया. तो अब इसको क्या किया हमने, ये जो कांस्टेंट्स हैं, वी आर जस्ट कंबाइनिंग देम. तो a plus c is converted to another constant, that is d, and it is bn. So t of n equal bn plus d. So when we are just denoting the time complexity in the notation form, okay, then in that case we simply ignore the constant values and these multipliers, like whatever these constant values are. So simply we can see here in this expression, like Tn equal Bn plus D. The complexity will depends
on the higher power of n. Rest all are these things are the constant. So T of n will be O of n. So this will be the worst case time complexity, means the algorithm in the algorithm there will be maximum number of comparisons to find a particular number. That number exists in the list, or if that number exists in the list at the last position, or if that number is not present in the list. Okay. So the work done before and after loop is independent of n, and work done during a single execution of loop is single execution. If we are talking about the single execution, in that case that is also independent of the n. एक बार ही चलेगा तो भी independent हो जाएगा n से, means contribution उसका one time हो जाएगा. But in the worst case the loop will be executed n times, so amount of work done is proportional to n. That's why the complexity of the algorithm is O of n, or the order of n. Now another searching algorithm, that is binary search. So the drawback of the linear search is this. Let's suppose we are having 100 elements array. So this is 99th location. तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेट्स सपोज देखो बेस्ट केस में तो क्या होगा, वो यहाँ पे मिल जाएगा. Worst case में क्या होगा? We need to do 99 comparisons. In the best case we need to do only one comparison, but in the worst case we need to do not 99, 100 comparisons. And if the number is not present in the list, and in an average case also we need to do a lot of comparisons. Okay, so for reducing the number of comparisons, there is another approach for searching a number in the list. The name of the particular search is binary search. So one condition on this particular searching algorithm is this: the list to be searched must be in the sorted form. Okay, so this binary search can be applied only the sorted elements of the array. The array elements can be sorted in the ascending order or the descending order. So according to that, our conditions and logic will be changed in the binary search. So in a general case, search a sorted array A of size n and looking for a value key. So this binary search algorithm is basically based on the divide and conquer approach. Now what is this divide and conquer approach? If we simply divide these terms into part, divide and conquer. So basic thing is this: let's suppose we are having a big problem, then rather than solving the problem in whole, just divide the problem into sub problems. Let's suppose we have divided this problem into two sub problems. Now again divide these problems into sub problems. तो हमको डिवीजन कब तक करना है? जब तक कि वो जो लिस्ट है वो अनडिविजिबल फॉर्म में पहुंच जाए. ठीक है, तो वी नीड टू डिवाइड द लिस्ट, एंड after dividing the list or dividing that problem into sub problems, solve each sub. Suppose this is the main problem, this is the sub problem sp, it is sp1 sp2. Okay, it is sp11 sp12, it is sp21, it is sp22. Okay, so finally after dividing the sub problem, the problem into sub problems, solve each sub problem individually. और जब हमको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आफ्टर दैट जस्ट कंबाइन द रिजल्ट, और जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं वी सिंपली कंबाइन द रिजल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द मेन प्रॉब्लम, लाइक दिस. So this is the divide and conquer approach. इसमें we will study this separately, and अभी तो हम binary search के context में हम I've just told you the basics of the divide and conquer, but separately we will study it and study some of the more important problems which are based on the divide and conquer approach. So now the logic in this binary search is this: the array must be in sorted order. So in that case, we need to compute the middle index or the mid of the array. And why we are just finding the mid location?
Suppose the list is in the sorted order. Lecture के बाद बताऊँ हाँ. The list is in the sorted order. Then suppose it is like this: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So अब इसमें benefit क्या है? We are just finding the mid location 0, 1, 2, 3. It is 4, 5, 6, 7 like this. So इसमें ये है कि हम मिड लोकेशन के एलिमेंट से हमारा जो नंबर सर्च करना है, वी विल कंपेयर आर द की एलिमेंट विद द नंबर एट द मिड लोकेशन. तो उससे हमको ये पता पड़ जाएगा कि आइदर द लॉजिक इज आइदर द नंबर will be at the middle location. So simply after finding the mid location, we simply compare our number to be searched with the middle element. तो या तो वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, then we can judge that the number can be smaller as compared to the mid location element or bigger as compared to the mid location element. तो benefit क्या होगा उसका? The list will be divided into two parts. Means suppose the number is not present at this mid location, then we need to focus either on the left half of the list or on the right half of the list. तो जिससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम का जो भी साइज है वो आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन द प्रॉब्लम साइज विल रिड्यूस टू हाफ, देन अगेन हाफ, देन अगेन हाफ. ठीक है. तो मैंने जब आप लोगों को इन यस्टरडे लेक्चर व्हेन वी आर एनालाइजिंग द एल्गोरिथम्स कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसमें जो लूप हमारे पास था, मीन्स अगर हमारा प्रॉब्लम का साइज डबल होता जा रहा है, मीन्स वी आर जस्ट अप्रोचिंग द एन, और अगर ये हाफ होता जा रहा है, इट मीन्स वी आर अप्रोचिंग टू 1 और 0. इन द बोथ केस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ log ऑफ n. ठीक है. तो ये जो ग्रोथ होगी ये log ऑफ n की फॉर्म में होगी. सो डिवीजन के बाद ये क्लियर हो जाएगा, द नंबर कैन बी इन द राइट हाफ और द लेफ्ट हाफ. देखिए. So if key is found at the mid location, it means we are done. Otherwise, we need to repeat the approach on the half of the array that might still contain the key. Or in the and we simply reach at a position where there is only a single element. और तो अगर वो सिंगल एलिमेंट से मीन्स प्रॉब्लम हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, लास्ट में जाके एक वन एलिमेंट में फाइनली ही डिवाइड होगी. So either the number will be that particular element or that will not. So it means we need to do a little number of comparison operation in this binary search as compared to the linear search algorithm. Now let's come to the algorithm. So this is the pseudo code of this particular algorithm. So we are just passing here the low and high and the key. So low is the lowest index value, high is the higher index value, and key is the number to be searched. So here we are just implementing the logic. While low less than equal high, what we will do, we simply find out the mid location, that is low plus high divided by 2. Then what we will do, this is the main logic. If array of mid or a of mid is less than key, मीन्स वो जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं वो इस एलिमेंट से, जो भी मिड लोकेशन के एलिमेंट्स है, ठीक है, वो जो की है इस मिड लोकेशन के एलिमेंट से अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन द राइट पार्ट ऑफ द लिस्ट. बट उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमारा इनिशियली जैसे लो तो ये था और हाई ये था, तो पूरी लिस्ट थी हमारे पास एक. तो जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो नंबर है वो मिड लोकेशन के एलिमेंट से नहीं, ये नहीं है, मीन्स राइट साइड में है, देन आर लो विल बी मॉडिफाइड. हाउ? सपोज इट इज द मिड, देन लो विल बी मिड प्लस 1. so it will be our new low for this new list, means mid plus 1 to high. But and assume like the number is लेस देन, बड़ा नहीं है तो इससे छोटा होगा, छोटा है तो कहाँ होगा, वो फर्स्ट हाफ में होगा. देन क्या होगा, लो तो यही रहेगा. व्हाट विल बी मॉडिफाइड, द हाई विल बी मॉडिफाइड. सो हाई विल बी मिड, सपोज इट इज m -1, it will be mid -1, means we need to focus on the left half.
तो या तो ये केस होगा कि मिड एलिमेंट से बड़ी है तो लो को मॉडिफाई करेंगे, अदरवाइज द की मिड एलिमेंट से छोटी है तो हाई को मॉडिफाई करेंगे। एल्स एल्स ये तीनों केस नहीं है तो इट मीन्स दैट विल बी द नंबर दैट वी आर सर्चिंग फॉर, so simply we return the mid, otherwise simply we return the -1 after the termination of this particular while loop. Okay, so this is the algorithm for binary search for the ordered list, or we can say the sorted list. The list is in the sorted order, either in the ascending order and the descending order. Now, if we are talking about the, just a second, if we are talking about the time complexity, or if we want to analyze this algorithm, then the amount of work done before and after the loop is constant and independent of time. जैसे हमारा ये लूप है, ये जो लूप है तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी डिपेंड कर रही है इस लूप पर। इससे पहले जो भी वर्क डन है वो कांस्टेंट है, आगे भी कांस्टेंट है, बिकॉज मेन लॉजिक यहीं पे डिपेंड कर रहा है हमारा। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ए सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज कांस्टेंट। अगर एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, सपोज जैसे हमने क्या किया, मिड लोकेशन फाइंड आउट की और नंबर जो है वो मिड लोकेशन वाला ही है, देन द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n, मीन्स अ सिंगल कंपैरिजन विल बी देयर। So the time complexity will therefore be proportional to number of times the loop executed, so that we what we want to analyze. But अब ये पता कैसे पड़ेगा हमको कि कितने कंपैरिजन होंगे, तो यहाँ तो क्लियर नहीं है। सपोज 1000 एलिमेंट्स की लिस्ट है, तो हाफ में डिवाइड किया, हाफ में डिवाइड किया, फिर हाफ में किया, फिर हाफ में किया, फिर हाफ में किया, पर एलिमेंट कम मिल रहा हमको, ये कैसे पता पड़ेगा यहाँ पे। तो फॉर दिस पर्पज इन द वर्स्ट केस की इज नॉट फाउंड इन द एरे, ये तो फाउंड ही नहीं होगी, और या फिर वो बिल्कुल लास्ट वाली लोकेशन पे होगी। ठीक है, तो ईच टाइम थ्रू द लूप एट लीस्ट हाफ ऑफ द रिमेनिंग लोकेशंस आर रिजेक्टेड। हर बार क्या होगा, जो भी लिस्ट है हमारी मिड लोकेशन पे नहीं है, सपोज लेफ्ट हाफ में है, ये रिजेक्ट किया, फिर इस पे फोकस किया हमने, फिर सपोज इसमें जो एलिमेंट है वो लेफ्ट हाफ में नहीं है तो इस पे फोकस करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे ही जो लिस्ट है वो हाफ 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 में हमारी कन्वर्ट होती चली जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर द फर्स्ट टाइम the size will be less than equal n by 2, then it will be less than equal n by 4, then it will be less than equal n by 8 and n by 2 raised to power k। तो जो हमारा साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा in the power of 2 every time we simply divide the list into half 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 half। first time में initially we are having the list as n, it is n, then इसके बाद हो जाएगा साइज इसका n by 2, then हो रहा है n by 4, then हो रहा है n by 8। we can write it like n by 2 raised to power 0, n by 2 raised to power 1, n by 2 raised to power 2, and it is 2 raised to power 3। और kth टाइम में क्या होगा, सपोज दैट kth टाइम इज द लास्ट इटरेशन। ठीक है, जब हम इसको लास्ट टाइम डिवाइड कर पाएंगे, देन दैट इन दैट केस n by 2 raised to power k। तो मीन्स हमारा जो लूप है वो k टाइम एग्जीक्यूट होगा। कि हम ये एज्यूम करें कि फर्स्ट इटरेशन में तो साइज हाफ हो गया, और केथ इटरेशन में ये जो साइज है ये हमारा लास्ट इटरेशन है। ठीक है, और केथ इटरेशन में आफ्टर दिस केथ इटरेशन दिस विल बी द साइज ऑफ द लिस्ट। और जब हम इसको लास्ट एज्यूम करके चल रहे हैं, इट मीन्स ये हुआ कि वो जो लिस्ट है हमारी दैट विल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल एलिमेंट लिस्ट। तो इट मीन्स ये जो साइज है केथ इटरेशन के बाद है दैट विल बी इक्वल टू 1, मीन्स n by 2 raised to power k इक्वल टू 1। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। ये क्या है, फर्स्ट टाइम के जैसे मैं वापस से यहाँ पर लिस्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज वी आर हैविंग दिस लिस्ट एंड वी आर so initially the list is size of the list is n। तो इस पहली बार में तो ये होगा n by 2 n by 2, पर हमको क्या इन दोनों में से एक लिस्ट पर फोकस करना है, तो साइज विल बी n by 2। तो सपोज हमको इस पार्ट पर फोकस करना है,
तो n by 2 इसका मेन साइज है, देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू अगेन हाफ, इट विल बी n by 4, n by 4. Suppose we need to focus on this, then it will again divide it into, suppose it is n by 8, n by 8. ठीक है, और assume it like in the k टाइम इसको हम करते जाएं तो लास्ट में हमारा जो लिस्ट है वो इस तरह से एक एलिमेंट की लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका साइज हो जाएगा दैट विल बी n बाई टू रेज टू पावर k. जैसे ही n बाई टू रेज टू पावर 3, ऐसे ही n बाई टू रेज टू पावर 2, लाइक दिस. So this is the size of the list after the kth iteration. तो हम वर्स्ट केस एनालाइज कर रहे हैं, इट मींस नंबर या तो लिस्ट में होगा ही नहीं या लास्ट एक लोकेशन पे जाके होगा बिल्कुल, तो वो हम एज्यूम कर रहे हैं उसका साइज हो जाएगा n बाई टू रेज टू पावर k. सो दिस n बाई टू रेज टू पावर k विल बी इक्वल टू 1 इन द kth iteration. तो वाई वी आर जस्ट डूइंग दिस, बेसिकली हमको किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, देन वी नीड टू फाइंड आउट दिस कि की ऑपरेशन कितनी बार हो रहा है. लीनियर सर्च में की ऑपरेशन कंपैरिजन ऑपरेशन है, इन द सेम वे बाइनरी सर्च में भी की ऑपरेशन कंपैरिजन ऑपरेशन है, and the algorithm's complexity is dependent on the key operation of that algorithm. ठीक है, तो की ऑपरेशन क्या हुआ, कंपैरिजन, और जितनी बार कंपैरिजन होगा उतनी ही बार हमारा क्या बोलते हैं, दैट विल बी आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो फर्स्ट टाइम हमने कंपेयर करेंगे तो लिस्ट हाफ में डिवाइड हो जाएगी, सेकेंड टाइम करेंगे और हाफ 1/4 हो जाएगा, फिर करेंगे 1/8 हो जाएगा, देन करेंगे 1/2 k हो जाएगा. तो दैट विल बी द साइज, मीन्स kth इटरेशन टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा. तो फाइनली द conclusion is this, we need to find out the value of this k that will give us the time complexity of this binary search. तो ये क्लियर हो गया हमें कि आफ्टर द kth iteration the size of the list will be equal to 1. okay, so this size will be equal to 1. so ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे इसको ith iteration ले लिया की जगह, इनिशियली लिस्ट इज n, then n by 2, then n by 2 raised to power 2, then n by 2 raised to power 3, like this. So we are assuming in the last iteration it will be n by 2 raised to power i. तो जब n by 2 raised to power i होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली इट विल बी इक्वल टू 1. तो ये है, तो यहाँ लिख देते हैं हम n by 2 raised to power I equal 1. okay, so n equal 2 raised to power I. now basically we want to find out the value of this. so by the properties of the log, कि I तो यहीं रह जाएगा, ये आ जाएगा 2 इधर और ये हो जाएगा log base. तो I'm just writing it here, log base 2, this will come in the base, it log base 2 n, एक मिनट, इट इज आई, तो आई तो इधर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा log n और 2 विल कम इन द बेस. तो द वैल्यू ऑफ द आई विल बी log ऑफ बेस 2n. तो कितना इटरेशंस वो लूप एग्जीक्यूट होगा वर्स्ट केस में, ith इटरेशन तक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस बाइनरी सर्च एल्गोरिथम विल बी log ऑफ बेस 2n. so in general, we can write the size of the problem as n by 2 raised to power I after ith comparison. Thus, for the base case means after that we can't further divide the list. That is, the list is in the undivisible form. तो जो size होगा उसको हमने equal to 1 किया और simply find out the number of iterations for the worst case. That will be the time complexity. So the time complexity of this binary search algorithm is O of log n, means it will take log of n time for the execution. So the comparison will reach the base case only in the worst case, and thus the binary search is O of log n algorithm.